let's remember that we are in the holy presence of our Lord. Dear Heavenly Father, on the special anniversary of the ordination of your priest, we praise your name. And we praise you for the grace poured out through his ministry, for every mass celebrated, every homily preached, every baptism, confession, wedding, and anointing, and for the countless prayers lifted on behalf of your church. Lord, please continue to strengthen him with your Holy Spirit. Fill his heart with zeal, humility, and joy, and renew him the fire of his priestly vocation. Protect him from every discouragement and bless his life with peace and holiness. We surrender our priest, Reverend Father Basharat Siraj, in your holy hands. May he always be a faithful shepherd after the heart of Christ, and may his ministry bear abundant fruit for your glory. This all we ask through our Lord Jesus Christ, who is our eternal high priest. Amen. और इस हवाले से सेलिब्रेशन की गई पूरे डिपार्टमेंट्स के लोगों ने, टीचर साहबान ने, और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मैसेज मिला कि यहाँ पर फादर जी ने एक मैसेज दिया है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे मसीही लोग जो देखने वाले हैं वो जरूर सुने कि फादर जी ने फ्लड में जो मुतासरीन हैं उनके लिए क्या मैसेज दिया। जी फादर जी बताइएगा। मैं आज खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं अपनी चौथी कहनाना मखसूसियत की सालगिरह मना रहा हूँ, और मेरे स्टाफ ने बड़ी खुशी के साथ इसमें शिरकत की है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने जो भी तोहफे तोहफ़ मुझे दिए हैं या मेरे लोगों ने इलाके में दिए हैं, मैं सबसे एक ही दरख्वास्त की है कि आप इस तरह का मुझे तोहफा दें जो कि मैं फ्लड विक्टिम्स को जितने भी पाकिस्तान में जगह जगह पर खसूसी तौर पर सियालकोट और नारोवाल और पसरूर में जाकर लोगों को अपने वो तोहफे देना चाहता हूँ। और इसके अलावा हमारे सेंट एंथनी स्कूल से बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स और टीचर मेरे साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि हम लोगों की जिनके सर पे अभी छत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, उनको हम जाके मदद करेंगे। और मैं चाहता हूँ हम तमाम काहिनों की एक ही ड्यूटी है लोगों की खिदमत करना, और वो हम सब बखूबी करते हैं। और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग साबे हैसियत है वो भी इस मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया। जी फादर जी, सर मैं देखा है कि जब भी ऐसा वाक़या होता है पाकिस्तान के अंदर तो कैथलिक मिनिस्ट्री जो उनके फलाई अदारे हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के और भी बहुत सारे अदारे हैं, वो जल्दी क्यों नहीं इस काम में हिस्सा लेते? मैं समझता हूँ जब भी जरूरत पड़ती है इस काम में लोगों की मदद के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स जो है पीछे रहे। अभी भी आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के छुपाने वाला आर्च बिशप बैनी मार्लो ट्रेविस की हदायत पर हमारी डायसिस के विकर जनरल फादर आसिफ सरदार कारितास के साथ मिलकर बहुत सारे पैरिशेस में वो गए हैं। कसूर के बॉर्डर्स पे भी गए हैं जहाँ पर लोगों को सैलाब की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सियालकोट में गए हैं, पसरूर में गए हैं, नारोवाल में गए हैं, और सियालकोट के जो हमारा पैरिश है उसके बॉर्डर के इलाकों पर जहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लड की वजह से तबाही हुई है, सैलाब की वजह से, वहाँ पर जाके उन्होंने मदद की है, उन तक पहुंचे हैं। और भी जो लोग हैं वो यकीनन मदद कर रहे हैं, लेकिन जो इस काम में पीछे रह जाते हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ ऐसे मुश्किल वक्त में यकीनन अपने लोगों के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना है कि फादर जी ने जो पैगाम दिया है रेवरेंड फादर बशारत सिराज साहब जो कि प्रिंसिपल भी है सेंट एंथनी के, और इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है कि जिस तरह मैंने जो मुझे तोहफे तोहफ़ मिले हैं कैश की शक्ल में और दूसरे मामला जो लोग दे रहे हैं, और मैं सारे के सारे जो जितने भी फ्लड में मुतासरीन हैं उनको देना चाह रहा हूँ। और हमारी मसीही कौम को मिलजुल कर ऐसे जो वाक़यात होते हैं पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स की सूरत में,
आगे बढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है कि हमारी मुस्लिम कौम का नाम पाकिस्तान के अंदर रोशन हो और ऊपर आसमान पर भी उनके लिए जगह बने।